Please check back. Uh, okay. So I guess now I should be audible to you, Mayank. If you can hear this, if you can hear my sound, अगर अब आपको आवाज़ आ रही है तो please can you acknowledge me in the chat section? आप कमेंट कर दीजिए. Or anyone apart from Mayank or anyone who is watching this, please help me with this. Am I audible to you all? Okay, thank you. Thank you, Mayank. So as I was telling you, sorry if my voice was not audible earlier. I was telling you about this webinar. Welcome back to this webinar where we will be discussing about IoTM. What is the theme of this IoTM? What is the theme of March month IoTM? Where we are going to do in it, how we can solve it, what are the prizes, and what is the theme actually. So for everyone who is watching this, please write down your name and age or school name in the chat section so that I can connect with you better and I can give you more relevant examples related to this webinar. What we are going to do in this webinar is we are going to note down some points like how can we participate in this competition, where to click, where to find the data, how we can actually make our submission, what else we can do in order to participate in this and test our skills, the programming skills. So I will just wait for 1-2 minutes and then I'll start after that. Okay, so I have received comments from Mayank. Thank you, Mayank. Okay, let's just wait for more and then I'll share my screen so that you can actually look what is the competition. Okay, so I guess now I shall start with the competition, how we can participate in it and what is the competition. So I'll just share another screen. Yeah, I guess the other screen is visible now. So yes, now how can I do it? I will go to this and I will just check if my screen is visible to you. Yes, my screen is visible. If it is visible, if you can see the Avishkaar website, if you can see this page where we have a lot of different competitions and it is written celebrate Avishkaar, please write down yes in the chat section. I can check the comments live. Mayank or anyone else who is watching, please. Yes, I can watch the replay on my live on my YouTube inside. So I will just go directly to the Avishkaar page. Now this competition, IoTM competition is Innovator of the Month and you might know, आप सब लोगों को शायद पता होगा कि हम ये कंपटीशन लास्ट ईयर 2022 से करते आ रहे हैं जिसमें हम ये साल में मल्टीपल ऐसे कॉम्पिटिशन्स करते हैं. वी डू मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स लाइक यू टू शोकेस देयर स्किल सेट, showcase their programming, showcase their mechanical designing skill set, showcase their app designing skill set or whatever. So if you are a good presenter, if you're a good project maker, this is a chance for you to win exciting prizes by just making some cool project and showcasing it to the world. I will just show you some previous examples. As you can see, these are some previous examples. In August month, we had this theme of green, smart, and safe cities. In June month, we had this theme of combating the war and terrorism. In April month, we had this theme of empowering the differently abled. And in March 2022, we had this pause the plastic. After that, we had our theme of IRC Mission Planet. This was a bigger competition in which we actually had two of the competition under Avishkar League. Where one was Avishkar Makeathon, in which it was actually a science based competition. So what you need to do is you need to create some solution to real world problems. Themes were shared with the participants and they made some interesting projects related to that. In IRC we had a totally robotics based competition. In it the participants need to solve the theme or the real life solution using some robots. So these were few competition which we went through last year. Now this year we are restarting with our IoTM in the March month and you can see we have already received 10 registrations
and in this 10 registration we will receive more registration. Now let us understand more about this competition, robo navigation IoTM March 2023. But let me just quickly go back to the live streaming, and then I guess this is visible to you all. Okay, so everyone, this is a competition where we actually where we can actually program a robot to solve a line following arena. And if we are able to do it properly, if we are able to move a robot from start position to a finish position under time limit, or under in very less time, you will receive some prizes, you will get some prizes. This programming challenge, this IoTM 1 challenge is actually there to help you with your programming skills. अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, अगर आपने कभी पहले लाइन फॉलोअर रोबोट नहीं बनाया, इफ यू हैवंट क्रिएटेड एनी काइंड ऑफ लाइन फॉलोअर रोबोट or any programmable robot, this is the time where you can learn more about this, and you can actually learn more about sensors, programming, how what are the constructs of programming, किस तरीके से हम AMS में प्रोग्राम बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रोबोट को प्रोग्राम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी दिस robot in this image. I'll just click on no more, and you can see this robot. This is actually on an arena, and you can see we had a robot on this arena, and then some black lines, and everything else is there. So what it says is robo navigation, minimize turns and maximize success. But before moving into this competition detail, I would just want you to give this link, how you can actually go to this link. First of all, you have to click on avishkar.cc. So I'll just click on avishkar.cc, and this will bring me to the home page, and then I'll click on the community page. So once I click on the community page, here comes my competition page. So I'll just copy this link and paste it in the chat section so that you can all reach to this community.avishkar.cc. Now what you need to do is, once you reach to this page, you can check out all other competitions as well, but currently we are talking about the robo navigation IoTM March 2023 competition. I'll just click on no more, and here you can find all the details about this competition. यहाँ पर आपको वो सारी details मिल जाएंगी इस competition के बारे में, जो भी actually में आप जानना चाहते हो इसके बारे में. तो एक छोटी सी description यहाँ लिखी हुई है कि in this competition, program your robot to navigate the line follower arena and record and submit your high speed run. Basically what you need to do is, आपको एक रोबोट बनाना होगा और उसको एक लाइन फॉलोअर एरिना के ऊपर रन करना होगा. वो लाइन फॉलोअर एरिना क्या है, किस तरीके से दिखता है, एंड कैसे आप उसको प्रिंट करवाओगे, कैसे आप उसको अपने पास लेकर आओगे, वो भी हम आपको बताएंगे. So what you need to do is, you need to first create a robot, program it accordingly, and then actually run that robot on that arena. और जो वो रोबोट रन कर रहा होगा आपके एरिना के ऊपर, लाइन फॉलोअर एरिना के ऊपर, यू हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो, एंड दैट वीडियो यू नीड टू सबमिट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. जब आपको यहाँ सबमिशन, जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबमिशन एंड्स इन 28 days. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू एनरोल नाउ. एनरोल नाउ करने के बाद क्या स्टेप्स आएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा. And then showcase your programming skills as you guide your robot through the line follower arena, taking as few turns as possible. There is a catch in this, but I would first want कि आप पहले एक normal arena पे try करिए, आप जितने आसानी से उसको कर सकते हैं. And then what you need to do is, you need to actually modify your program to make it make it fast. So सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रोबोट है वो केयरफुली पूरी की पूरी लाइन को फॉलो कर रहा है, जो भी लाइन फॉलोअर एरिना है. एंड अगर हम उसको उसके टर्न्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच रहा है, देन again it's a win for you. So how would you go through this? First of all, there is the theme called robo navigation. यहाँ पर again वही सारी details लिखी हुई हैं. 2 points, bullet points है, line follower robot and minimum turns, what you need to do, what you need to make sure. Then prizes, there are few prizes, 1 grand winner prize, 2 runner up prize, and 3 honorable mention prizes. This again will be revealed by next week, by next webinar. क्या prizes होने वाले हैं? There will be some exciting prizes like last time. कुछ गैजेट्स हो सकते हैं, कोई स्कॉलरशिप हो सकती है, कोई बढ़िया सा लर्निंग टूल हो सकता है, इस तरीके की बड़ी सारी चीज़ें विच यू कैन विन. एंड नाउ किस तरीके से ये सिलेक्शन होगा? बेसिकली एज द डिस्क्रिप्शन सेज, आपके रोबोट को मिनिमम से मिनिमम टर्न्स लेनी है, एंड मिनिमम से मिनिमम टाइम में वो अपना रोबोट को कंप्लीट करना है. आपके रोबोट को कंप्लीट करना है इस एरिना को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश.
and based on that time limit, based on the code you submit, based on the video you submit, there is a proper guideline for that, and we'll just go through that, and then I'll tell you how you can actually submit your video or how you can actually make the submission. So okay, so I'll go to the project guideline. In this project guideline, यहाँ पर clearly लिखा हुआ है, challenge your programming skills and program your robot to navigate the line follower arena. Again the same thing, the goal is to guide the robot from the start to the finish position, फॉलोइंग द ब्लैक लाइन एंड टेकिंग एज फ्यू टर्न्स एज पॉसिबल. तो अगेन यहाँ पर हमने बात वही कर रहे हैं कि हमें अपने रोबोट को स्टार्ट से फिनिश एरिया पे पहुंचाना है और ब्लैक लाइन को फॉलो करते हुए जाना है. अब मैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई वुड जस्ट वांट टू शो यू what is that line follower arena. So this is the line follower arena, if you all can see. So this is how actually you guys can see it. This is basically the line follower arena. In this line follower arena you can see there is a start position, there is a finish position. Your robot needs to start from here and actually उसको यहाँ पर पहुँच के रुक जाना है. अब वो किस तरीके से पहुँचेगा, बड़े सारे रास्ते आप देख सकते हैं. You can see there are a lot of options. कोई भी एक पाथ फॉलो कर सकता है हमारा रोबोट. वो चाहे तो यहाँ से आके इस तरीके से जाके ऐसे ऊपर ऊपर से भी जा सकता है, या नीचे वाला पाथ फॉलो कर सकता है, या कोई भी मिडिल वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है. एंड अगेन देयर आर वेरियस टर्न्स, बहुत सारे रास्ते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली द टास्क. तो टास्क बड़ा सिंपल है, आपको अपने रोबोट को स्टार्ट से फिनिश पे पहुंचाना है. एंड मेक श्योर कि आपका जब रोबोट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो वो सबसे छोटा रास्ता अपनाए या सबसे कम टर्न्स ले. तो सबसे कम टर्न्स लेने के लिए what you need to do is you need to first solve it manually. आपको एक पेपर पे या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल के उसको खुद पहले सॉल्व करिए, किस तरीके से लॉजिक क्या आप बनाते हैं, कहाँ पर वो टर्न लेगा कहाँ पर नहीं लेगा. इट इज़ लाइक अ रिडल और अ पजल, मोर लाइक अ पजल. जिस ऐसी पजल्स आपने बहुत बचपन में सॉल्व करी होंगी जिसमें बेसिकली एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, एंड यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन टू फाइंड द पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स. सो सेम उसी तरीके का है, बट द कैच इज here we have to solve it with our robot. So that means uh, and in addition to the pathfinding, in addition to the brainstorming, we need to actually work on our robot and the programming of the robot. So यहाँ पर हम उसमें टेक्नोलॉजी भी ऐड कर रहे हैं, जो हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स या एक जनरल मेंटल मैथ की प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर पजल्स एंड इस तरीके की जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, इन प्रॉब्लम्स में, इन रिडल्स में, इन पजल्स में हम अपनी टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं. That's how we will actually learn how to make a smart robot, how we can actually make a robot which can complete a task without the human need. So initially हमने उसको एक बार प्रोग्राम कर दिया, प्रोग्राम करने के बाद the robot will work on its own. कोई भी रोबोट रिमोट नहीं कनेक्ट होगा, कोई भी ऐप कनेक्ट नहीं होगा उसके साथ. इट विल वर्क entirely with the help of sensors and programming. So this will actually help you to practice more towards AI, how you can add AI in your robots, AI in your machine, how it will. So these are few basic steps of these. First of all we need to learn how can we actually make our robot smart. तो पहला स्टेप तो यही है, स्मार्ट बनाना है रोबोट को, सेंसर्स की हेल्प से स्मार्ट बनाना है. तो सेंसर की हेल्प से स्मार्ट बनाने के बाद उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कराना है. वी नीड टू explain the robot through programmings how it can solve a simple task of finding a path. Okay, so this is the arena. I hope it is clear to you all. If anyone is watching it, please write down yes or no. Okay, I'll move forward. So I hope, let me just quickly, yeah. So let's move forward now. As we have learned about the project guidelines कि हमें एक रोबोट बनाना है और एरिना किस तरीके का दिखना है, बात करते हैं मटेरियल गाइडलाइंस के बारे में. So we'll just talk about few material guidelines. What are the material guidelines in order to solve this problem, in order to participate in this competition? There is only one guideline that you have to use only आविष्कार products, और आविष्कार के products ही आपको यूज करने हैं. सेंसर्स आप या तो IR सेंसर या फिर कलर सेंसर्स यूज कर सकते हैं, एंड आपको कोई भी और किसी किट का पार्ट यूज नहीं करना है, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. आप कोई और
कंपनी के प्रोडक्ट्स भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ आविष्कार के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. सो इफ़ यू डोंट हैव एनी किट, we you can go to the shop page over here and you can buy yourself a kit. There are several different kits you can buy on your own choice. You can actually go for the robotics section directly through here, and then you can find different kits. So I would suggest you would go to this robotics advanced kit, in which you will receive a brain, few sensors and few better advanced metallic parts, जिसके थ्रू आप बहुत बढ़िया बढ़िया रोबोट्स बना सकते हैं. यू ऑल कैन सी देयर वी हैव डिफरेंट रोबोट्स. सो आप और भी कोई रोबोट चूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर रोबोटिक्स एडवांस किट. आई वुड रिकमेंड robotics advanced kit for you, so that you can actually create some good robots. So again, go back to the community page. Go back to the competition. And now we were just talking about material guidelines. तो material guidelines अब हमें पता चल गई कि हमें सारे के सारे जो robots हैं, अपना जो भी robot हम बनाएंगे वो आविष्कार की kit की help से ही बनाना है. We have to create a robot only with the help of our Avishkaar robotics kit. The recommended kit is robot Avishkaar advanced kit, in which you will receive several metal parts and several different sensors with which you can create a smart robot and a big robot as well, or a small robot, however you like it. And you cannot use any other robotic system or open source kit. For example, आप Raspberry Pi या Arduino या फिर ESP ऐसा कोई भी ओपन सोर्स कंट्रोलर नहीं लगा सकते प्रोग्रामिंग करने के लिए. आप कोई भी ओपन सोर्स मेटेलिक पार्ट्स नहीं लगा सकते या प्लास्टिक पार्ट्स नहीं लगा सकते विच इज़ रेडिली अवेलेबल ऑन इन द मार्केट, या आपको कहीं से भी आप खुद भी कोई पार्ट बना के नहीं कर सकते. तो दिस इज़ वन गाइडलाइन विच यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो, that you have to only create it with the help of Avishkar kit. And then there are some video guidelines. तो अब बात करते हैं सबमिशन के बारे में, how we can actually complete the submission. तो सबमिशन हमें करना क्या है, बेसिकली हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपने रन की. जब हम अपने रोबोट को प्रोग्राम कर लेंगे अच्छे से, उस रोबोट को प्रोग्राम करने के बाद हमें उसकी एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है. जब वो उस एरिना पे काम कर रहा होगा, एरिना पे काम करते वक्त उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है. जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आप यू कैन एंड दिस वीडियो. इन दैट वीडियो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट मेक श्योर कि आपके रूम में प्रॉपर लाइटिंग हो, रोबोट अच्छे से दिख रहा हो, एंड यू कैन रिकॉर्ड इट इन मल्टीपल एंगल्स. आप उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से रिकॉर्ड कर लें. एंड you have to start that video by stating your name and your details. Like you can see, try recording it in a room with good lighting. Record your moving robot from different angle and introduce yourself in the video by stating your school name, your name and age, so that it is known to us कि आपने जो ये रोबोट बनाया है ये आपका ही रोबोट है. एंड आप कोई और आपकी वीडियो कॉपी करके ना यूज़ कर ले, तो दैट विल ऐड अ कॉपी राइटिंग पॉइंट इन इट. तो आप अगर उसमें अपनी फ़ोटो दिखाएंगे, आप अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे उस वीडियो में, तो दैट विल add as a benefit to you, and also to get a know of you, like आपकी एज क्या है, आप कौन से स्कूल से, आपका नाम क्या है. सो इन ऑर्डर टू, लेट से आप कंपटीशन जीत जाते हैं, तो हम आपको बेटर इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे टू द वर्ल्ड एज वेल. ओके, so this is what you need to do in order to create the video. Along with this you have to submit a code. जो भी आपने कोड बनाया अपने रोबोट को एरिना को सॉल्व कराने के लिए ऑन AMS सॉफ्टवेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं we have an AMS button. I'll just go through it. So what you need to do is you need to select that code, download that code and upload it while submitting it. तो आपको वो रोबोट का कोड भी सबमिट करना है, so that we can actually see how it looks like. In case you are not able to download that code, you first need to actually click a picture. आप एक अपने रोबोट का स्क्रीनशॉट, कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वो भी सबमिट कर सकते हैं. तो प्लीज़ गो थ्रू दैट. आपको ये करना ही करना होगा. अगर आप कोड सबमिट नहीं करेंगे तो योर entry will not be qualified. Okay, so that is another thing. Now let's talk about how we can actually download that arena. So we have this tab of assets, and you can find this card over here where it is saying size 7 feet by 3.5 feet. So what you need to do is you just click on no more. After clicking on no more, you will find this, and एक pop-up में खुल जाएगा. If you will just click it, pop out,
तो ये इस पेज पे इस तरीके से खुल जाएंगे एंड फ्रॉम हेयर यू कैन डाउनलोड इट और बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ओपन विद एंड गूगल डॉक्स और वहाँ पर भी खुल सकता है ये एंड देन यू कैन एक्चुअली डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर एंड देन गेट इट प्रिंटेड। आपको जो प्रिंट करवाना है, अगर आप आविष्कार के सिस्टम से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो यू नो दैट वी प्रिंट आर एरिनाज ऑन फ्लेक्स। फ्लेक्स मटेरियल जो होता है जिसके बैनर्स बनते हैं, वो मटेरियल यूज होता है टू प्रिंट दैट। सो आपको ये प्रिंट करवाना है अपने पास और देन आपको ये सॉल्व करना है, अपने रोबोट को फिजिकली सॉल्व करना है। देयर इज नो सिमुलेटर और एनी ऑनलाइन सिस्टम टू रन योर रोबोट। दिस इज अ ऑफलाइन कंपटीशन जिसमें आपको अपने घर पे ये प्रिंट करके सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द साइज इज 7 फीट बाय 3.5 फीट। So this is how you actually solve it. This is how you will actually participate in this. So I'll just take a break first and then look at some questions. Let's see, do we have any questions? So I'm waiting for some questions. If you have any question regarding this competition, please let us know. Okay, so I guess we don't have any question. Let us just go back to the competition page and then I'll just show you how you can actually participate in this. So just go to enroll now, click on enroll now. First you have to obviously log in into your account and then click on enroll now, and then you can see we have this competition. I'm already participating in this competition, and then you can actually go to this. I can create a team avatar, select a team avatar, create a team and participate in it. So basically let's select something. I'll select this one. I'll write down what should be my team name. Robo runners. So only alphabet are allowed. So team name, someone has already used this team name, but actually you can use some other team name and then create and participate in this competition. Once you go to this and you can see your competition over here in your profile. So click on my Avishkaar. On the left hand side you will see this tab and there you will find a flag which is for robot. So what you need to do is, you already know this, that first you need to download that arena, download the digital file of that arena, get it printed, and then actually you need to solve it, program your robot and solve it. So I'm just going to show you this so that you can go through it and actually understand it better. So let me just quickly change some settings. So as you just saw that the robot was also a light follower robot. It was solving some problem statement. It was actually working on one arena, a different type of arena, not the same arena, but it was actually completing a task entirely by just with the help of sensor or programming. So that is how you need to actually create your own robot. आप वो डिज़ाइन भी चूज कर सकते हो, आप कोई और डिज़ाइन भी चूज कर सकते हो, and वो whatever you want to make, you can make that. So again, I guess this was all about the competition details. I would just wait for more comments. If we have any more comments, if we have any questions related to this competition, I would be happy to take this. Uh, please ask your questions. Whoever is watching this video, please ask your question in the comment section, and then if you don't have any questions, no issue.
But that is how I hope you understood how we can actually participate in this competition, how to download that arena file, what is the project guideline, what are the project guidelines, what are the material guidelines, कब तक हमें सबमिट करना है. अभी स्टिल वी हैव ऑलमोस्ट 1 मंथ 28 days, मतलब ये 15 अप्रैल तक कंपटीशन लाइव रहने वाला है. It will be live till 15th of April. You can make your submission by then. And similarly, uh, सो अगर हमारे पास अभी 1 महीने का टाइम है, दैट मीन्स वी कैन ऑलरेडी क्रिएट द रोबोट, वी कैन program it multiple times, record the video multiple times and finally submit that solution जो सबसे अच्छा है. So I would just come back. So yep. Okay, so I guess we don't have any more comments or any questions till yet, so I would like to end this session over here. If still you will have any questions related to this competition, you can reach out to us through our support mechanism on our Avishkaar website. You can actually comment down your questions in the if you are going to watch this video after some time, it will be on our YouTube channel. अगर आप इसको बाद में देखते हैं and you still have any question, you can comment down in the chat section or you can comment down in the video for the video and we will answer your queries. So thank you all. Thank you for joining in this webinar related to this IoTM competition. We will meet next time. Thank you.